बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं उस्मान अहमद रिएक्शन। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने घर वालों के साथ खैर खैरियत से होंगे और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। इसके अलावा नाज़रीन, जुम्मे के दिन की ढेरों बरकतें, मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सब पर, आप सबकी फैमिली समेत नाजिल फरमाए और हम सबको दीन इस्लाम पर चलने की पूरी तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक होने वाला है ट्रिक्स ऑफ शैतान, यानी वो क्या ट्रिक्स हैं जिनसे शैतान हमें बहकाता है या हम बहक जाते हैं। तो नाज़रीन, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि वीडियो से जो हासिल होने मालूमात हैं, हासिल होने वाला जो फ़ायदा है वो आप हासिल कर सकें और उसको दूसरों तक पहुंचा सकें। तो नाज़रीन, मज़ीद टाइम ज़ाया के बाद वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके अलावा नाज़रीन, आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नाज़रीन, मज़ीद टाइम ज़ाया के बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فدلاهما بغرور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu Alaikum Quran Weekly. The 22nd ayah of Surah Al-A'raf is a long one, but in this brief reminder I want to share with you the first part of the expression that's used in it that has just an incredible amount of wisdom for life in our dealings with shaitan. Allah Azza wa Jalla is describing how shaitan got our parents Adam and Hawa salamun alayhima to make the mistake that they made. What was his strategy to get them to listen to him? Not just what he said to them. We all know that he whispered to them. We all know that he offered them eternity and that they could stay in Jannah. We know that. But how did he do it? What method did he use? That method is important to understand, and it's captured in the first expression of the ayah, فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ. Dalla is used when you draw a bucket. Like dal in Arabic is a bucket. And adla is to drop a bucket down and pull it right back up. You know, in the old times there's a well and you kind of crank up the water, you know, and you pull the bucket back up. This is adla. But dalla is to slowly lower the bucket, or to put a bucket, you know, for a very primitive way of hunting an animal. You have some food like a carrot or something, you put it inside a bucket and it's tied to a rope, and the animal comes and you kind of pull it little by little by little by little towards yourself, and the animal follows it. This is actually called dalla. Like literally, shaitan didn't go out and say disobey Allah. He offered it a little bit, just a small little bit of compromise, and they listened, and then he offered just a little bit more. It's harmless. What I'm saying isn't haram. I'm just saying just don't take it a little bit easy, you know. And then you don't have to eat from this tree. In the case of our parents, you don't have to eat from. I'm not saying you should eat from the tree. I'm just saying at least check it out. It's a beautiful tree. There's no harm looking at it, is there? Now look, Allah's commandment was وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ. Don't go near this tree. So the first thing he says, look, at least you're not touching it. Okay, at least you're not touching it. Just go near it. What's the big deal? And then when they go near, then you know what? It's not like you're not supposed to climb it. You're just not supposed to eat from it. Just have a little climb. It's no big deal. And it's not at one time. Dalla also suggests that these suggestions came a day, then another day, then another day, then another day. Like this was a process for this guy. It wasn't like he whispered to Adam alayhi salam and immediately he went and ate from the tree. There's actually an entire strategic, little by little by little winning over the argument that he's doing. فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ. And that's what he does to us to this day. This is the reason it's mentioned in the Quran, that he drew them out with using this. And the bighurur I didn't translate, using deception. This is a kind of deception. In other words, there are things that are clearly wrong. You and I know that. There are things that are clearly wrong. But there are a lot of small, not as clearly wrong steps that are there that you should have the sense to know, if I take this one tiny step, tomorrow I'll be taking another tiny step, and then another, and then another, and before I know it, I'll end up in the wrong. So you have to put protective measures in place. And when you put those protective measures in place, it keeps you from falling into trouble. Now shaitan comes and he doesn't attack, or he doesn't tell you to make the haram into halal,
oh, that's too direct. And the Muslim will say, no, it's obviously haram. I'm not going to do that. He comes and he says, listen, this one little step I'm asking you to take, it's clearly not haram. That's not wrong. You could do that much at least. There's nobody that can blame you for that. And then people come and say to the scholar, to the alim, to the da'i, to the khatib, hey, so I know that doing, drinking is wrong, but can I hang out with friends who drink? I mean, I'm not going to the bar or anything, but sometimes they drink in my office. Can I just be with them? Just, because, they're my friends. Can I at least do that much? Is it absolutely haram for me to do that? And the scholar will say something like, I advise you not to do it. It's not a good idea. It's bad company. But is it haram? Is it absolutely haram? And he says, well, I don't know if I could say it's okay, thanks, I got my answer. It's not absolutely haram, which means I could do it. And that's how shaitan gets you to first hang out with them. Then they say, hey, we're going to the bar, you want to come along? Then you go to the bar and you're just having a Coke or whatever and they're drinking their beer. And then eventually one late night, it's a little bit of can you just slip some in? Somebody gave it to you or they slipped it into your drink and you didn't realize. And you're like, well, I didn't intend to do it. And it's just one thing after another, after another, after another. SubhanAllah. This is فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ. This is the same surah in which Allah mentions the story of Barsisa, who went little by little into sin. And this is not the occasion to tell you that story, but the point is the same. Shaitan will not come at you directly calling you to do the wrong thing. Shaitan will come at you to try to just compromise or get on the road to the wrong. And by the way, when you're on that road, until you do the wrong, nobody can come out and directly tell you, listen, by the way, this is wrong what you're doing. Because it's not wrong. It's on the road to it. And if you don't recognize that you're being pulled slowly but surely towards it, then you only have yourself to blame. This is why Allah's commandment to Adam alayhi salam, the advice to Adam alayhi salam, wasn't just don't eat from this tree. The advice was don't go near it. There's a big difference between those two things, And so you and I have to recognize there are some things that are clearly haram, but there's a road that leads to them. We have to watch out and not go on that track that shaitan's trying to reel us into. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum. बिल्कुल नाज़रीन, बहुत ही बेहतरीन, जैसे कि इन्होंने एक आयत बताई फ़दल्लहुमा बिग़ुरूर, इस आयत के मुताबिक और इस आयत के मफ़हूम के मुताबिक इन्होंने बताया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बता रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स यानी कि आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम को मतलब शैतान ने कैसे बहकाया, कैसे निकाला। और जैसे कि इसका बड़ा मकसद यानी कि जैसे कि एक शजर था, जो दरख्त हम सबको पता है, आप और मुझे भी पता है कि शैतान, जैसे इन्होंने इस वीडियो में बताया कि शैतान ने उनसे वादा किया था कि आप सारी ज़िंदगी के लिए मतलब मौत नहीं आएगी आपको कभी, आप और भी बहुत से किया था, लेकिन अल्लाह पाक ने क्या कहा था कि उस दरख्त से कुछ नहीं खाना। और जैसे कि इन्होंने इस वीडियो में कि अल्लाह पाक ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा था, अल्लाह पाक ने कहा था कि उस दरख्त के करीब भी ना जाना। तो शैतान ने पहले कैसे किया कि मतलब उनको बोला कि आप उसको हाथ तो नहीं लगा रहे, तो एटलीस्ट यू शुड लुक अराउंड, यानी कि आपको देखना चाहिए। तो ऐसे ऐसे जब उन्होंने देखने लगे तो उन्होंने कहा कि सिर्फ फल खाने से मना किया, तो आप उस पर हाथ भी लगा सकते हैं, उस पर चढ़ भी सकते हैं, यानी कि स्लोली प्रोसेस। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दी कि जिसमें बेसिक अरबी जो आयत है इसका जो मफहूम के मुताबिक मतलब फ़दल्लहुमा का, जैसे उन्होंने बताया कि वो जो आप स्लोली खींचते हैं, किसी को खींचना, एक तो होता है ना कि तेज़ी से खींचना, एक होता है कि स्लोली बहुत आहिस्ता आहिस्ता। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल कैसे दी कि पुराने ज़माने में जैसे कुएँ होते थे तो हम उन पर वो रस्सी लपेट के जो उसको बाहर निकालते थे, कि बाल्टी जो होती थी उसको हम डाल के फिर बाहर तेज़ी से निकालना, तो ये कि उसको बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता निकालना। तो शैतान यही काम करता है। वो क्या कहता है कि वो हमें डायरेक्टली ये नहीं कहता कि आओ ये गलत काम करो, ये हराम काम करो। वो हमें क्या कहता है कि अब हमें, जैसे कि उन्होंने बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको और मुझे सबको पता है कि क्लियरली वो क्या है, हराम है, लेकिन क्या है कि उससे कुछ मतलब कह लें कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि जो क्लियरली हराम नहीं है, लेकिन क्या है कि वो एक तरीके से रोड हैं उस गुनाह की तरफ बढ़ जाने के लिए। तो शैतान क्या करता है कि वो हमें ये नहीं कहता कि आप हराम काम करें, वो हमें कहता है कि पहले कि इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, जो हमने अपने इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव मेजर्स लगाए होते हैं कि इनकी वजह से हम उस गुनाह के करीब नहीं जाएंगे। तो शैतान क्या करता है कि उन्हीं प्रोटेक्टिव मेजर्स पे हमला करता है कि पहले एटलीस्ट हमें इस स्टेप पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, फिर अगले नेक्स्ट स्टेप पे। जैसे कि उन्होंने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी ड्रिंकिंग की कि मैं ड्रिंक तो नहीं करता, लेकिन मेरे फ्रेंड ड्रिंक करते हैं तो मैं क्या मैं उनके साथ बैठ सकता हूँ। तो ये पहला स्टेप है, इस पर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। क्यों? क्योंकि अ मैन इज़ नोन बाय कंपनी ही कीप्स। अगर आप बैड कंपनी में बैठेंगे तो आप भी उसी तरह बन जाएंगे। और सर्टेनली फिर क्या होता है कि वो बाहर जाने लगेंगे तो आप कहेंगे
کہ چلو میں باہر جا رہا ہوں تو میں صرف کوک پیوں گا، اور بعد میں ایسا ہوگا کہ وہ کوئی جان بوجھ کے آپ کے اس میں ڈال دے گا لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوگا، اور آپ کہیں گے کہ میں نے جان بوجھ کے تھوڑی کیا ہے، اور اس کے بعد سلائٹلی یعنی کہ سلولی آپ جو ہے اس میں گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ اگر آپ اس ٹریک پہ چڑھ گئے جو کہ چیزیں کلیئرلی حرام نہیں ہیں، تو کوئی آپ کو یہ نہیں بولتا کہ یہ غلط ہیں، کیونکہ آپ نے کوئی غلط کام ابھی تک نہیں کیا۔ لیکن یہ چیز ہم نے ہی اپنے آپ کو ریکگنائز کرنا ہے، ہم نے ہی ان چیزوں کو پہچاننا ہے آس پاس کی، اور پھر ہم نے ہی اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اگر ہم یہ کرنے میں ناکام ہو سکتے تو ہمیں اپنے آپ کو ہی بلیم کرنا چاہیے، نہ کہ کسی اور کو۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہوگا، اور اس چیز کو آج کے مطابق اپنے ہر چیز میں جو آس پاس کی چیزوں کو ایسے نوٹ کریں گے کہ کیا یہ چیز گناہ کی طرف کوئی ٹریک تو نہیں ہے، گناہ کی طرف کوئی روڈ تو نہیں ہے جو ہمیں گناہ کی طرف لیڈ کر رہا ہے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سیکھیں گے اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے اور ان کو بھی تلقین کریں گے۔ تو ناظرین، this was my reaction. I hope you liked it. If you did, then please hit that like button and leave down your lovely comments in comment section. اس کے علاوہ جو ہر ویڈیو میں اپنی کہتا ہوں ایک بات، وہ یہ کہ آپ کوئی اچھی بات سیکھیں تو اس کو سب سے اپریشیٹ کرنے کا بہترین طریقہ کہ اس کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آئیں، اور اس کو جتنا زیادہ ہوگا دوسروں تک شیئر کر سکیں، چاہے واٹس اپ، فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، ٹویٹر، اور بھی جتنے بھی سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں، یا سمپل لوگوں کو بتائیں تاکہ وہ بھی ان چیزوں پہ عمل کر سکیں، اور آگے دوسروں کو بتائیں تاکہ ان کو بھی کہہ لیں شیطان سے بچنے کے طریقے آ سکیں، اور یہ کہ دین کی طرف وہ لوٹنے والے بن جائیں۔ تو ناظرین، see you soon انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو. Till that time، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔